So this question we have done already, and just we'll continue with some further new questions. This also we proved previous class. Power is equal to force into velocity. How did we prove it? Power is equal to work done upon time. Work done is force into displacement divided by time. Force into displacement by time is called velocity. The product of force applied on the object and velocity, its velocity will give the power in the particular object. So power is also the product of force and velocity of the object. How much force is applied on the object, how fast it is moving, multiply both of them, you will get the power in the particular object, how much powerful it is, how much power it has. All right. So this also we did it, है ना? यहाँ से करना था हम लोग को. From here we have to do. Does the transfer of energy takes place when you push huge rock with all your might and fail to move it? Fail to move it. Where is the energy you spend goes? Transfer of energy take place when you are pushing the huge rock. होता है क्या कुछ ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का? बोलो. रॉक तो मूव नहीं हो रही, फिर भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस. Are you there? Yes, sir. Yes. हाँ sir. Yes, yes. क्या हो रहा है बताओ? What is happening? सर मस्कुलर एनर्जी लूज हो जाती है इसलिए बॉडी हीट अप होती है. हीट में कन्वर्ट होती है. We feel tired and hot. पसीने भी आने लगते हैं. Yes, sir. Why do we Stretch sweat? muscle. हम लोग Why do we sweat? हम लोगों को sweating क्यों होती है? Because temperature goes up. तो body generate its own cooling system. Sweating होती है. Temperature of body is controlled. Summer में particular sweating ज़्यादा होती है ना. Temperature sweating controls the body temperature. When there is too hot, body starts sweating and it starts its automatic system to control its own temperature. है ना, sweating होने से temperature control होता है. So muscular energy converts into heat energy. ठीक है. Okay. What about this question? This is new question for you. First time you are seeing. देखो. Pump on the ground floor of the building can pump up water to fill the tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and efficiency of the pump is 30%. मतलब pump जो है 30% efficiency पे operate हो रहा है. Have you heard the word efficiency? कोई क्वेश्चन किए हैं तुम लोगों ने efficiency के? Efficiency जो होती है ना, ratio of output power output upon input power. So output power is efficiency is 30%. 30% means 30 upon 100. So 0.3 output upon input power. So output is 0.3 times of input power. Suppose 100 watt input hai, so we get 30 watt output only. That is what is the meaning. Have you done similar question anytime? Efficiency वाला सुना है? किया है बताओ? Anywhere you have done? No sir. First time. Yes sir. First time you are listening. ठीक है, ये just additional question I am giving you. तो इस type के questions. Efficiency of any machine, है ना? Is output upon input. It can be output power. It can be output work upon input work.
दैट इज व्हाट इज द एफिशिएंसी वर्ड. ठीक है, तो हम जितना जैसे मशीन जैसे अपनी व्हाट इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल की जो इंजन है, दे आर आल्सो नॉट दैट एफिशिएंट, हार्डली 30% एफिशिएंट. जो पेट्रोल हम जितना पेट्रोल की एनर्जी होती है, वट एवर द कंबस्शन ऑफ पेट्रोल इज देयर, it is hardly 30% or 25% is used. Suppose petrol is burning and producing say say 100 joules in one combustion. So hardly 30 joules converts into, or 25 joules converts into the useful work of that kinetic energy. बाकी फ्रिक्शन में हीट डिसिपेशन, हीट हो जाती है इंजन, वहां से हीट डिसिपेट हो जाती है, फ्रिक्शन में डिसिपेट हो जाती है, ट्रांसमिशन सिस्टम में डिसिपेट हो जाती है. तो we can utilize 1/3 of the energy which is available. Similarly, these motors also, इलेक्ट्रिसिटी जितनी सप्लाई प्रोवाइड करती है ना, उसका 30% roughly 30% वर्क ही होता है. अदर इज वेस्टेड इन द फ्रिक्शन. एक तो मोटर में फ्रिक्शन होता है, फिर ऊपर से वाटर जब ऊपर जाता है तो देयर इज अ फ्रिक्शन इन द पाइप, बेंड्स में फ्रिक्शन होता है ना. तो देयर इज lot of friction and a lot of losses are there. Things are not that ideal which we assume. All right, तो बताओ फिर आगे क्या करेंगे? What should be done in this question? Go through and tell me. Getting any clue? Anybody? Shubhan, what is your take on this question? Sir, 1 minute. Siddhant, Krishna, and Adit. बताओ Adit, how are you Yes, approaching sir. this question? इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? Of course, main formula remains power is equal to work done upon time. Time is given है ना, direct time is given, minute में है, into 60 कर देंगे, it will be seconds, it should be in seconds है ना. Work done कितना? Okay, यहाँ पे मैं लिख दूं PO stands for output power. PI is input power. जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रही है. Power is equal to output power is equal to work done per unit time. Work done is, यहाँ पे क्या होगा work done? MGH, potential energy. MGH upon time. Mass is not given. So, but we can calculate mass. How to calculate the mass? Mass is volume into density. Volume into density का symbol rho होता है. It looks like P, but it is not P. We call it Yes, rho. GH. बस हो गया अभी. आया output power जो हमें मिल रहा है, which is sending the water up, is equal to 30% of input power which electricity is giving. So 0.3 of input power which है ना, तो वॉल्यूम का V, डेंसिटी का रो, GH upon T. Input power is required, volume into rho into G into H upon 0.3 T. So volume is given, of course given. Yes, sir, given. Or density of water you are supposed to remember, है ना? I think I have told you density of water in some other question. It is exactly 1000. Exactly Yes, 1000. 1000 kg per meter cube. था ना पीछे कहीं पर?
तो देखो कितना हाँ हो सर, रहा आपने डेंसिटी ऑफ गोल्ड भी बता है। दिया। यस 30, ये 10 to the power 1000 मीन्स 10 power 3 लिख सकते हैं। जी को चले टेक इट 10, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके सर। H is how much? 40 अपॉन 0.3 टाइम को 15 into 60, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ कितना है। 10 to the power 3 रहने दो, 10 to the power 3 को हम लोग किलो लिख देंगे, किलो वॉट में आंसर दिया हुआ है। How much is the answer coming? So क्या 44.4. Sir, 44.4. ओके, आंसर गिवन इज 43.6 किलोवाट। हाँ तो जी की वैल्यू 9.8 ली होगी Yes. तो 43 पॉइंट, ठीक है, 43.6 किलोवाट इज द आंसर गिवन। क्लियर? कुड यू गेट दिस? ठीक है। If any doubt you can ask. This is slightly of higher level question, 11th का क्वेश्चन है, 11th की बुक का, वर्क फॉर एनर्जी का है। I told you similar chapters will be there in the standard 11th standard, chapter number 6, question number 15. Anything you want to ask? No, sir. Shall I move on to the next question? बोलो ये क्वेश्चन बताओ। Go through the question, tell me the formula and get the right answer after that. Solve it and हाँ बोलो, just tell me. Siddhant, how to solve this question? Shubhan, Adit, Krishan, Sir, work done equals force into displacement.
and force equals mass into acceleration. तो सर वैसे तो acceleration कहाँ है इसमें? A is not the acceleration. A is the constant here. A is not the acceleration here. A is constant, not the acceleration. Anybody else? Siddhant, are you there? Yes, sir. बोलो कैसे करें? सर सोच रहा हूँ. Krishna, सर 2 मिनट. okay. Work done is equal to change in kinetic energy also. Yes, sir. उससे हो जाएगा. Oh, Work done by all forces sir, is equal उन्होंने to change. displacement का ये दिया है. Range. So change in current Ke2 minus Ke1 half Ke2 half mv2 square half m कॉमन ले लो v1 स्क्वायर. ठीक है. तो देखो कितना आ रहा है. How much is the answer coming? Sir, half m into 5 into 2 raised to power 3 by 2. Final answer is what? Yes, sir. What is the final answer? Now it is calculation only. Calculation you can do it fast and accurately. So 50 joule. So 50 joule is the first answer coming. Who's Adit? Yes, किसका आंसर है? आदित्य सर की मेरा. सिद्धांत? Adit. नहीं हम आदित्य. ओके चलो आदित्य का 50 joule is coming. शुभान. सर 50 मेरा भी. ओके ठीक है. उसमें वैल्यू पुट करनी है. 50 is the right answer. हाफ मास इज 0.5. v2 में a x2 पावर 3 का होल स्क्वायर. ये तो 0 ही हो जाएगा v1 में. x is 0 तो v1 will become 0. है ना. a is Yes. 5 स्क्वायर होके 25 हो गया. x क्यूब हो गया. x2 is 8 हो जाएगा ये ना. तो 50 is the right answer. So this is also from 11th standard book.
but we know this formula. Change of kinetic energy is equal to work done. Yes, इसमें sir. स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो डिफरेंशिएशन वगैरह सोचने लगते हैं, बट इट इज डायरेक्ट, इट इज नॉट एक्सेलरेशन वगैरह नहीं निकलना, डायरेक्ट ही है वो. गॉट इट? This we were already doing. Commercial unit of energy is how much? It is 1 kilowatt hour, which is equal to these many, after converting it into SI unit, these many 3.6 million joules. So this much energy is equal to 1 unit. 1 unit of electrical energy. जो घर में जो bill आता है, if you consume this much energy, you have to pay, it will be 1 unit. For 1 unit, it is close to 10 rupees or less than 10 rupees you have to pay. तो ये क्वेश्चन हो गया था. $60 watt का बल्ब है, 6 hours per day. 6 hours तक उसको कंटिन्यूअस ऑन रखा, तो 60 into 6 watt hour, but it should be in kilowatt hour. 10 to the power 3 में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा था. तो दिस इज kWh. kWh is kilowatt hour is unit, 1 unit. तो इधर 0.36 हो जाएगा, तो इट इज 0.36 unit consumption, less than 5 rupees you have to pay for this 6 hours of its use. Yes, sir. But nowadays ये पुराने book हैं. These are the old books where we used to have the 60 watt bulb and 100 watt bulb. Now you can use the same amount of electricity, same amount, even more than. Now 10 watt LED gives more light than the 60 watt bulb. Incandescent bulb, filament bulb जो थे ना, we are talking about that. So that Oh, bulb yes. is used to give less power, less brightness, less light as compared to nowadays 10 watt LED bulbs. Now you can, for that much amount, you can use 6 bulbs. Even we used to have 100 watt bulb, that was sufficient. Otherwise, tube light, that is a 40 watt. Tube light generally 40 watt. अभी LED tube light आ गई हैं, they are less watt, is 10 watt. All right. Activity are a point. Now you can do this activity now. Take a close look at the electric meter installed in your house, but be careful. उसके पास ज्यादा नहीं जाना है, otherwise current लग सकता है. You can just have a look from some distance. Observe its feature closely. दूर से देखना उसको. Take the reading of the meter each day at 6:30 a.m. and 6:30 p.m. 2 बार reading लो. Suppose it is showing, okay, it is showing say 6,230. ये उसकी रीडिंग होगी. यूनिट्स इतने कंजम्पशन हो चुके हैं, डिपेंड हाउ ओल्ड द मीटर इज, है ना. इट मे बी मोर से, ठीक है, इट मे बी से 9,250. दिस इज द रीडिंग एट मॉर्निंग. नाइट में देखेंगे तो इट मस्ट हैव इंक्रीज बाय से 5 यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन कंजम्पशन, कैसा कंजम्पशन है. तो इवनिंग में इट मे गो अप बाय 5 or 10 units or 2 units, even विंटर में कम कंजम्पशन होता है. तो इवनिंग में नोट करो, है ना. रीडिंग्स उसकी जो दिखती है ना, विजिबल, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं मेजर नोट करने, यू कैन आल्सो सी. ऑलराइट. डू दिस एक्टिविटी अबाउट अ वीक. हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डे टाइम. डे टाइम में 6:30 से 6:30 तक डे टाइम में कितने कंज्यूम हो रहे हैं. और नाउ हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम ड्यूरिंग नाइट टाइम. नाइट का कैसे पता लगेगा? अच्छा, कैसे पता लगेगा? यू आर टेकिंग द रीडिंग एट 6:30 AM and 6:30 PM. तो डे टाइम के लिए 6:30 की जो रीडिंग है, मॉर्निंग 6:30 की जो रीडिंग है, उससे माइनस कर दो. सपोज 6:30 की रीडिंग जो है से
500 है और मॉर्निंग की 6495 है, डिफरेंस विल बी 5। बट नेक्स्ट डे फिर क्या करेंगे, जब जो ये वाली रीडिंग होगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो होगी 6:30 की, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस प्रीवियस डे की इवनिंग की। दैट डिफरेंस विल गिव यू द नाइट का कंजम्पशन आफ्टर 6:30 के बाद का कंजम्पशन। यू कैन सी whether consumption is more in morning time, morning 12 hours or night 12 hours, है ना, evening and night 12 hours. So you can have the recording, है ना, उसको डेट डाल के लिख सकते हैं, है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग की, मॉर्निंग एंड नाइट की। So you can see which is during night more consumption is there or during morning more consumption is there. This activity you can do it, but be careful, उसको हाथ पत नहीं लगाना मीटर को, because sometimes they are short, वो उसमें ही करंट आ जाता है। तो you have to see it from distance, टच नहीं करना उस वायरिंग को, मीटर को। कभी कभी मीटर में लाइव वायर टच हो जाती है, कभी आपको पता लग जाता है लाइव वायर टच हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी हैवी करंट फ्लो, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, हैवी करंट फ्लोज एंड फ्यूज इज मेल्टेड और दैट कॉन्टैक्ट्स आर टिप्ड ऑफ, है ना, वो स्विच होते हैं ना, वो नीचे हो जाते हैं या ऊपर हो जाते हैं, उसको फिर हमें अपनी पोजीशन पे लाना पड़ता है। स्विचेस जो टिप ऑफ हो जाते हैं, टिप ऑफ। बायोमेटेलिक, इट इज अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप, है ना, लाइक फ्रीज में भी होता है कि हीट होने से और पर्टिकुलर कोल्ड टेम्परेचर होने से they are just bending and tripping the supply. Electric iron में भी होता है bimetallic strip. When it has reached to the sufficient temperature, it will heat it up and bend and break the contact and again cool down. It will become straight and again break the contact. Electric iron, refrigerator, they have the bimetallic strip to switch off and switch on again when the particular temperature is reached. ऐसे उसमें भी होता है। तो शॉर्ट सर्किट होता है तो टिप ऑफ हो जाता है ना। आई टेल यू मोर अबाउट द शॉर्ट सर्किट, नॉट नाउ, इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पावर की बात कर रहे हैं। तो यूनिट यू कैन जस्ट काउंट इट, उसमें जो डिजिट्स होती हैं, जैसे अपने ऑटोमोबाइल में, हैव यू सीन इन आवर ऑटोमोबाइल दैट मीटर इज देयर, ओडोमीटर वी कॉल इट, बिहाइंड दैट बैक साइड ऑफ द स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाले में नीचे एक डिजिटल एक काउंटर होता है, वो ऑडोमीटर, दैट इज काउंटिंग द किलोमीटर। Similarly, electricity meter में it is counting the units, electrical unit consumption, which is nothing but a 3.6 into 3.6 million joules. When you consume 3.6 million, this is million only, 10.6 is million or mega. This is 3.6 megajoule or million joule. This is 1 unit. So joule is very, very small unit, even if it is a SI unit. But as far as day to day life का जो consumption है electricity का, it is many millions joules per day. We are using many millions joules per day. Suppose 10 unit हम use कर रहे हैं, 10 unit use कर रहे हैं suppose, or 5 unit we are using daily. So it becomes roughly 15 million joule, like this. 10 unit use कर रहे हैं तो 36 million joules per day. So this seems to be very big value, but practically they are not that big. All right. So how many units are used? You have to just make the table and tabulate them for your observation. All right. Draw inferences from the data. Compare your observations with the details given in the monthly electric bill. Okay, you can just check it. Suppose you are taking the reading for 1 week, roughly 4 times of that consumption should be there, roughly, plus minus some changes depending upon the winter is approaching or summer is approaching. So roughly 1 week का जो observation है, 4 times of that should be there, or slightly more than 4 times. So electricity bill से तुम देख सकते हो कितने units आई and how much you have to pay. All right. So you every month that bill comes in around 10th of the month. Last month का bill अभी आने वाला होगा. You can see it.
ठीक है, got it? Anything you want to ask here, just ask. Anything you want to know about this point, you can ask, then we see the some more numericals based on this. अच्छा, we will not rejoin. अभी 40 minutes का जब finish हो जाएगा, we don't join because I have to go to doctor. थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है घर में, ठीक है? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Will not rejoin. Monday most probably we'll have the same time. Monday को 3:30 we are supposed to have the class. Yes, sir. 3:30 to 4:30, ठीक है? Yes, So we'll sir. have that time. If there is any change, any problem comes, then I will inform you. Otherwise, Okay, sir. Monday 3:30 and Tuesday 2:30 है ना? Okay. Yes, sir. हाँ, sir. चलो, अभी जितनी देर चलेगा क्लास उतनी देर चलने देते हैं, फिर उसके बाद विल नॉट ज्वाइन. ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, फर्स्ट यू क्लैरिफाई योर डाउट, देन वील सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स, देन वील एंड द क्लास. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं आंसर. Certain household has consumed 250 units of energy, electrical energy during a month. How much energy is this in joules? Joules में कितनी energy है ये? What to do? How to do? Sir, 250 into 3.6 into 10 to the power 6 joules. Yes, sir. Simple calculation. 1 unit is 3.6 into 10 to the power 6. So therefore 250 is 250 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू पता है हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 250, देखो कितना है, देन वी सी द मैच द आंसर. ओके, 1 unit is equal to 1 unit is how much? 3.6 into 10 to the power 9 6 to 10 to joules. the power 8. Therefore 250 unit 3.6 into 10 to the power 6. कितना आ रहा है? 9. So 90 crore. 9 into 10 to the power 8. Yes, sir. 8 हाँ, joules. sir. ठीक है. हाँ, correct है, 9 into 10 to the power 8 joules. Simple question. ठीक है. And what about this? This is 10th question of your exercise, अपनी book का. Object of mass 40 kg is raised to the height of 5 meter above the ground. What is the potential energy? कितनी होगी potential energy? 30,000 joules. Sir, 2000 joules. 2000. mgh है ना, mgh 2000. mgh. Yes, sir. If we take G10, 2000 joules. If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. Sir, फिर 2.5 से 2.5 joules से मल्टीप्लाई कर देंगे. बट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना. तो पहले उस वो निकालेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के फिर माइनस कर देंगे. ओके ओके, तो व्हाट इज द आंसर कमिंग? Sir, 1000 joules. 1000. आगे सिंपल कैलकुलेशन है. देखो, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट. हाइट आधी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो गई. तो वेयर दैट पोटेंशियल एनर्जी हैज गॉन, it has gone, it is Sir, converted total sum into same रहेगा. converts into kinetic energy. So you Kinetic don't have to energy. you don't have to find out the velocity, otherwise you will just end up in the time wastage है ना. velocity निकालनी पड़ेगी, फिर half mv square. तो better use the logic of that conservation of energy. Midway पर potential energy will become 1000, so that 1000 will convert into kinetic energy. That is answer is 1000. Simply you can just justify. फर्स्ट का आंसर 2000. फर्स्ट का आंसर कैलकुलेट कर लो. सर फिर सेकंड का 1000 आएगा, फिर माइनस करके 1000 joules आंसर. सर टोटल सम सेम रहेगा. टोटल सम सेम रहेगा. तो हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना. Yes, दिस इज sir. 2000. मिडवे पर
तो सेकंड का आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो यू कैन जस्ट कंप्लीट टोटल पोटेंशियल Complete the- एनर्जी इज इक्वल टू हाँ। पोटेंशियल एनर्जी ओके चलो डाउन इसको कंप्लीट कर प्लस देते एनर्जी हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एनर्जी dash is equal to mgh by 2. एच So this is 1000 joules